then your salah is your ibadah. Your zakah is your ibadah. Your hajj is your ibadah. Your sacrifice is your ibadah. Like it comes in the Quran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. That my prayer, my sacrifice, my life and my death, जिंदगी और मौत भी किसके लिए? सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए. ऐसी जिंदगी. This is dedicating your ibadah to only Allah subhanahu. That is Tawheed al-Uluhiyyah. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبَرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Surah Al-Ghafir, ayat number 60. Allah subhanahu wa ta'ala says, call upon me, I will respond to your invocations, your du'as. Verily, who scorn my worship shall surely enter hell in humiliation. Means if you don't call upon him and you give this haqq of Allah to someone else, what is going to be your reward? It's going to be hellfire. So giving the haqq of Allah to anyone is a very grievous sin, and that we will discuss after I tell you about Tawheed Asma wa Sifat. After Tawheed al-Rububiyyah, that Allah Ta'ala is the Rabb, Tawheed Uluhiyyah, that Allah Ta'ala is the alone ilah who we should worship. The third form of Tawheed is Tawheed Asma wa Sifat. That is, Allah Subhanahu wa Ta'ala has all the beautiful names and attributes. तमाम खूबसूरत नाम और सिफात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हैं, और ये अस्मा और सिफात कोई और उनसे नहीं छीन सकता. आई समझ में? हम लोग क्या नादानी करते हैं? व्हाट वी डू आउट ऑफ इग्नोरेंस, हम ये सिफात और ये नाम दूसरों को भी दे देते हैं. बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला wants from us that when we do ibadah, we do only his ibadah. When we say the names and attributes, it should be only for him, no partners. As it comes in Surah Al-Ahad, Surah Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Say he is Allah, the one, Allah, the self-sufficient master whom all creatures need. He gives no birth, nor was he born, and equal to him is not anyone. Now what did other religions do? Some said Isa is the son of Allah, some said Uzair is the son of Allah, some said the angels are the daughters of Allah. But Allah subhanahu wa ta'ala's attribute is not to give birth. So this is absolutely wrong. They did garbad in Asma Sifat. They did not understand. Allah subhanahu wa ta'ala is Ahad. Lam yalid wa lam yulad. He does not give birth, nor was he born. And equal to him is not anyone. What we do is, we even ask dua to some people, or people who are dead long back, and they are sleeping in their graves. We go to their graves and we ask, oh, this and this, just make this dua and just take this dua to Allah subhanahu wa ta'ala. I'm asking through your wasila and all that. This is all wrong. We should ask directly to Allah subhanahu wa ta'ala. Worshipping people who are the people of graves, it's not applicable. So, what is Tawheed Asma wa Sifat? We have to call upon Allah with His beautiful names and attributes and not associate anyone in these names and attributes also. No. No. We cannot take the wasila of anyone because we have to directly ask Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, beautiful names belong to Allah, so call Him upon with those names. We have to call Allah subhanahu wa ta'ala with all those beautiful names. O Khaliq, O Raziq, O Ya Rabb, Ya Rabb al-Alameen, Ya Dhul Jalali wal Ikram. Grant me with this, grant me with this, give me this, give me rahmah, forgive me. So all these beautiful names you should ask for in your dua, you should use them and ask Allah subhanahu wa ta'ala for whatever you want. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. There is none equivalent to Him, and He is all hearing and all listening and all seeing. So this is the attribute of Allah, that there is nobody equal to Him. We have to accept Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody can be compared to Him, and none can be equivalent to Him. So these are the three parts of Tawheed.
Tawheed al-Rububiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala is the creator, Rabb, Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mutadabbir and Al-Raziq. And then second point is Tawheed al-Uluhiyyah, that Allah subhanahu wa ta'ala is the only ilah, only He has the right to be worshipped. We cannot give this right to anyone else. And Tawheed Asma Sifat, all beautiful names and attributes only belong to Him. Now, if you want to understand Tawheed better, you will also have to get an insight on Shirk, which is the opposite of Tawheed. Because black को समझने के लिए white को भी जानना ज़रूरी है. Black और white होता है तभी तो black और white में difference पता है. So Tawheed और Shirk उसकी जो मुनाफी है, जो उसका opposite है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हमें कैसे समझ आएगी Tawheed क्या है? ठीक है? तो what is Shirk? Is the next thing. So Shirk is associating partners with Allah. This is the most common definition which we all usually hear. Even when we are teaching Islamic studies or even when teaching our children at home, Shirk is to associate partners with Allah. But to give it a more, an explanation that is more clear, it is to give the qualities of Allah, the attributes of Allah or the haqq of Allah to someone else. देखिए कभी भी कोई शौहर नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी उससे ये कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूँ. वो यही पसंद करेगा कि वो कहे कि मैं आपकी ही बीवी हूँ. राइट? तो एवरीबडी लाइक्स टू बी, मतलब उसकी अपनी पोजीशन हो. अल्लाह ताला के लिए कोई मिसालें नहीं है. लैसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल बसीर. उसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है. पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़ अगर हम किसी और को दे देंगे तो क्या ये उसकी ज़ात के लायक? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है. हमें उसका हक़ किसी और को नहीं देना चाहिए, ख्वाह वो उसकी इबादत का हो या उसके अस्मा व सिफ़ात का हो. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पता नहीं पसंद नहीं करता कि जिसने आपको इतनी नेमतें दी आप उसके साथ किसी को शरीक करें. सही कह रही हूँ? ये आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं कुरान में कि उसने आपके ऊपर कितनी नेमतें बेपनाह जो आप गिन नहीं सकते वो दी हैं. उसके बावजूद फिर जब आप खड़े हो मुसल्ले पे तो आपका दिमाग किसी और ही चीज़ में लगा हुआ हो नमाज के टाइम पे, क्या वो इस बात को पसंद करेगा? या आपकी कोई भी इबादत हो वो किसी को दिखाने के लिए हो या उसमें थोड़ा सा भी कुछ शिर्क हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो हमें क्या चाहिए? हमारी इबादत मुखलिसीन लहुद्दीन हो, बिल्कुल इखलास के साथ, बिल्कुल प्योर अल्लाह ताला के लिए. Shirk is to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. This is the most common definition, but actually it is to give the respective attributes of Allah to someone who does not deserve them. For example, you can see in Quran, Luqman alayhi salam, who was a wise man. You all know Luqman alayhi salam. There is a surah Luqman. He advises his son. What does he advise? He advises him that Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim. Oh my son, don't do shirk with Allah because that is a grievous crime, a grievous sin. Because Luqman alayhi salam knew the intensity, the depth of how grievous this is to give the haq of someone to someone. यानी अगर हम अपना हक यानी इवन घर में देख लीजिए आप, इनइक्वालिटी होती है या कोई आपका हक छीन के किसी और को देता है, कितना बुरा लगता है. तो लुक़मान अलैहिस्सलाम इतने वाइज थे और अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिकमत दी थी कि उन्हें समझ में आया कि किसी का हक जब किसी के पास चला जाता है तो कितनी बुरी बात होती है. तो उन्होंने अपने बेटे को यही सीख दी जो हमें भी अपने बच्चों को देनी चाहिए कि या बुनैया, ये मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ शिर्क न करो. इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम. शिर्क बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बड़ा जुल्म है. जुल्म अल्लाह ताला पर नहीं, जुल्म अपने आप पर, क्योंकि वो हम लोगों को जहन्नुम की तरफ लेके जाता है. Allah's haq should not be given to anyone of his makhluk because no one is equal to him. एक हदीस है अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रजुल या रसूलल्लाह अय्यु ज़ंबिन अकबर इंदल्लाह क़ाल अन तदअु लिल्लाहि निद्दन व हुव ख़ल्क़. सही बुखारी की हदीस है. इब्न मसूद फरमाते हैं कि one man once asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam what is the biggest sin in the sight of Allah.
So